अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के दरमियान में होने वाली जो इमर्जिंग टैरिफ वॉर है उसके ऊपर बात करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। हम बुनियादी तौर पर तीन एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। एक एस्पेक्ट होगा दैट विल बी अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ब्रॉडर पॉलिसी ऑफ द टैरिफ्स। दूसरा जो बैकग्राउंड के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दैट वुड बी अबाउट जो हिस्टोरिकल और फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के दरमियान में जो ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो उसके बाद शॉर्ट से एक ओवरव्यू लेंगे। बट देन विल कम टू द पॉइंट दैट व्हाट हैज हैपेंड that Trump administration decided to escalate the conflict with India on tariffs. What factors actually motivated Trump administration to do that? उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट जो important point है that is the consequences and impacts of such a tariff war globally and on the respective states as well. ये तीन एस्पेक्ट है नाज़रीन जिसके ऊपर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। But before I go on to explain, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, we have started a morning batch of Pakistan affairs as well as political science paper 2 for the CSS and the PMS aspirants. नाज़रीन, मॉर्निंग बैच का बुनियादी मकसद तो बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वर डिमांडिंग फ्रॉम मॉर्निंग बैच। एक तो वो वजह भी थी, और सेकेंडली आई वांटेड टू हैव अ स्पेशलाइज्ड बैचेस ऑन द सेलेक्टिव नीड्स ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स। और खासकर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 जो है दैट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी a hit by the many aspirants, because in the last 2 years we have seen a significant reduction in the marks for the paper 2. Therefore, I thought that it is an ample opportunity for me and for every aspirant to focus on paper 2 of the political science, so that you can earn overall very excellent and very good marks for the CSS. और ये जो पेपर 2 है इसके अंदर हम प्राइमरली फोकस करेंगे ऑन स्पेसिफिक टेक्निकलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड and to write in the actual papers. Pakistan affairs on the hand is also specialized because we want to purely focus on the Pakistan affairs, which is not just relevant to the Pakistan affairs subject, which is compulsory subject, but also many optional. जो political science का paper 2 है उसमें भी ये बड़ा help करता है, essays वगैरह में भी help करेगा, और obviously this is also relevant to many other optional subjects including Indo-Pakistan history as well. सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक। नाज़रीन, टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो डिस्कशन है यूएस और इंडिया टैरिफ वार की, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज ऑलमोस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक वी नेवर थॉट that India US tariff war could escalate to this level, obviously mainly because of the fact that historically India has enjoyed a special relationship with the United States, and more so under Trump administration. I think since 1990s United States has courted itself with India, or it has developed a strategic deepening partnership with India, चाहे वो क्वाड की फॉर्म में हो, चाहे वो 2+2 डिप्लोमेसी की फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रंप पर्टिकुलर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका जो पर्सनल काइंड ऑफ कनेक्शन था विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसको अभी वो एक फ्रेंड कहते हैं, और उनके साथ जो एक उनका ब्रोमेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप था, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे लास्ट टाइम, तो मोदी ने उनकी बाकायदा इलेक्शन कैंपेन की थी दैट वाज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल, बट ट्रंप वाज इनवाइटेड टू इलेक्शन रैली इन इंडिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड मोदी पार्टिसिपेटेड इन अ रैली इन यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल फॉर ट्रंप. So it was such a kind of a special relationship, not just between the two persons but broadly between the two states. But हमने देखा कि जब ये टैरिफ वार शुरू होती है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबसे पहले अप्रैल में जब टैरिफ अनाउंस करते हैं, तो तमाम अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्टेट्स पे, इवन द क्लोजेस्ट अप्लाई जैसे इसराइल है, उसके ऊपर भी टैरिफ अनाउंस करते हैं। इंडिया के ऊपर भी एक डिस्काउंटेड टैरिफ जो था दैट वाज 26% रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो इम्पोज किए गए थे, टू विच इंडिया वाज नॉट वेरी अनहैप्पी। और हमने देखा कि उसके बाद ट्रंप ने वो टैरिफ को सस्पेंड किया और स्टेट को 3 मंथ का टाइम दिया कि आप रीनेगोशिएट करें, और इंडिया के साथ भी रीनेगोशिएशन चल रही हैं। बट फ्रस्ट्रेटेड बाय द डिलेज ऑफ दोज टैरिफ्स, अल्टीमेटली ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो 25% टैरिफ जो हैं वो इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं, विच वाज 1% लेस दैन द अप्रैल अनाउंसमेंट. But soon afterwards, he started making social media posts claiming that India has been buying the Russian oil. Therefore, India will be penalized more if it does not cut off its energy relationship with the Russians. India, on the other hand, showed a defiant attitude, और उन्होंने अल्टीमेटली हमने देखा कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजीत डोवल, he was sent to Moscow and he met with the President Putin, और at that time it was also revealed that Putin is going to visit India. तो frustrated by those moves, ultimately Trump ने अनाउंस किया that वो रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स हैं उनको डबल कर रहे हैं. Now 25% tariffs have already been imposed, but जो 50% tariffs हैं ये जो इम्पोज होंगे, दे विल बी इम्पोज्ड इन द
नेक्स्ट 2 वीक्स। जब अनाउंस की गई थी तो 3 वीक्स थे, बट इट्स नाउ 2 वीक्स लेफ्ट नाउ। अब नाज़रीन, इसके बाद हम अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात करें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी है टैरिफ की, दैट इज एक्सपेक्टेड बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन अक्रॉस द बोर्ड imposing tariffs. Even Pakistan gave it despite a successful deal. They have imposed 19% tariffs in Pakistan, which means that there is no respite from the tariffs. But what you can negotiate is a respite in the amount of tariffs that are imposed on you. India failed to do that, and that's why that failure not led to the imposition of 25% tariffs, but an additional 25%, doubling of the original tariffs that the United States had imposed on India. अब नाज़रीन स्पेसिफिकली बात करते हैं वाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब वो इतने स्टीप टैरिफ्स इंडिया पे लगा रही है। और जैसे मैंने पहले कहा था इंट्रोडक्शन में, कंपेयर टू ओनली ब्राज़ील जिसके ऊपर 50% टैरिफ्स हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो टैरिफ्स हैं वो इंडिया के ऊपर लगाए गए। क्यों? और स्टेटमेंट भी बड़ी एग्रेसिव आ रही है। नाज़रीन उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट उनमें से अगर मैं एक फैक्टर की बात करूं तो दैट इज़ इंडियाज़ डिसीजन टू मेंटेन इट्स रिलेशनशिप विद रशिया, जो बड़ी प्राइमरली बात भी की गई बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। वी नो दैट इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ द रशियन ऑयल, और जिस तरीके से एक ट्वीट की गई दैट इंडिया इज़ एक्चुअली फ्यूलिंग द वॉर मशीनरी इन रशिया बाय बाइंग रशियन ऑयल, नॉट जस्ट बाइंग फॉर इटसेल्फ but also processing it and then selling it to the international market. So India is making business of the war in Ukraine. That's the primary concern of the Russian president. Although Russia is not hostile, although Donald Trump is not hostile to Russia, but buying Russian oil is an indirect way of giving President Putin more space, more cushion to negotiate a peace deal that Trump is more desperate than Zelensky at this point of time. Now, this is something that has frustrated Trump. Trump wanted that if he wants to pressure Putin, जिससे उन्होंने threat भी किया था tariffs का, that India should join that bandwagon, and India should also side with the United States in threatening Russia that if it doesn't want to, go for peace deal as has been desired by Donald Trump, India would discontinue the buying of oil. But this is something that India refused to do, and therefore this frustration led to the significant increase in tariffs. Second factor is the India's own tariffs on United States. We know that India has historically been a shielded and protected economy, but it has started gradually liberalizing since 1990s. But India has yet to completely liberalize, and particularly इसका जो retail sector है और India का सबसे important जो agriculture sector है, it's 1.44 billion population. उसकी जो agriculture sector है, that is significantly and jealously guarded by the Indian state. United States on the other hand wants to because Trump's main constituency है, that's a rural constituency, and therefore United States want India to open up its agriculture to the international investment and international trade, which India is unwilling to. And that factor of not opening up its agriculture is very close to and sensitive to Trump's constituency, and therefore Trump is more egoistic and more vocal critic of India. उन्होंने बड़े clearly कहा that no other country imposes more tariffs and more barriers to trade with United States than India does. He even singled out India above China as the state जो कि सबसे ज़्यादा hurdles create करती है in the way of bilateral trade and tariff-free trade between United States and India. So in that context हम कह सकते हैं कि जो ट्रम्प के लिए ये मामला जो है वो सिर्फ एक स्टेट का मामला नहीं है, दिस इज आल्सो अ मैटर ऑफ हिज पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, बट सो इज फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्होंने कल परसों स्टेटमेंट भी दी बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर को किसी सूरत में भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। सो इट्स अ पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर फॉर बोथ ऑफ दीज लीडर्स, पर्सनल मैटर्स, एंड बोथ आर वल्नरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड देयरफॉर दे आर अनविलिंग टू बज ऑन दैट। Another फैक्टर नाजरीन जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का जो रोल है दैट हैज बिकम कंट्रोवर्शियल इन इंडिया, दैट फैक्टर इज आल्सो प्लेइंग अ रोल हियर। नाज़रीन हम जानते हैं कि जो 10 मई को इंडिया पाकिस्तान में लास्ट राउंड ऑफ बैटलफील्ड हुआ था, स्ट्राइक की गई थी एक दूसरे की मिलिट्री एयर बेसिस के ऊपर, उसी रात को फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया दैट ही हैज़ ब्रोकर्ड अ डील बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर अ सीज फायर, और उसके साथ साथ जो है वो नेगोशिएशन भी करेंगे न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान और इंडिया। नाज़रीन वो जो अनाउंसमेंट थी दैट वाज हेल्ड बाय पाकिस्तान, एंड so much so that Pakistan even officially nominated Donald Trump for the Peace Prize, Nobel Peace Prize,
Or India, on the other hand, has been very sensitive to a third party involvement, because that has been India's consistent policy since independence, more or less, since independence, of no third party involvement on its conflicts and disputes with other states, and particularly so on the issue of Kashmir. So any acceptance of the United States mediation on this ceasefire, because this conflict had escalated from an event in Kashmir, the Pahalgam incident in Kashmir, Pahalgam tragedy in Kashmir. Therefore, India के लिए ये accept कर लेना that United States had played a role that has been politically unacceptable, not for Congress, not for BJP particularly. But Donald Trump, who has been very fan of himself and who has always been putting himself as a global deal maker, the peacemaker, and India's consistent denial and Trump's consistent claims of playing a role is something that has brought India directly into conflict with Trump's core, issue, core demand, core kind of value of Donald Trump, in which he wants to take credit. So when he is denied that credit, this is something personal to Donald Trump, and that's why it has been one of the major factors why United States has been imposing high tariffs in India. In addition to that, there is speculation in India. कल मैं देख रहा था फ्री जकिया के प्रोग्राम के अंदर जो है वो बरखदत आई थी, उनका आर्गुमेंट भी बड़ी फ्रस्ट्रेटेड किस्म का एनालिसिस था उनका। उसमें भी उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने इंटाइस किया है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर जिसकी बुनियाद पे जो है वो इंडिया के ऊपर जो है वो हाई टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं। आई डोंट थिंक सो, इट्स एन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी इशू। अगर ये कहना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, ये फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कान भरे होंगे इसलिए इंडिया पर टैरिफ्स हैं। आई थिंक दैट शोज द लो इन इंडियाज जर्नलिज्म एज वेल एज frustration with the United States. But definitely India's consistent rejection of Trump's claims is something that is directly, that's a direct factor causing frustration in the Trump administration. Another factor is the BRICS. Now, we know that Donald Trump is a very, very strong critic of the BRICS, और उन्होंने ब्रिक्स के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट भी दी हैं। और जब ब्रिक्स का समिट हो रहा था तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी थी दैट दो स्टेट्स हु विल बी ट्राइंग टू गो फॉर डी-डॉलराइजेशन, द ब्रिक्स स्टेट्स, दे विल बी गिवन एडिशनल पेनल्टीज in addition to the existing tariffs. और इंडिया इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फाउंडर्स ऑफ द ब्रिक्स, और बिकॉज उस सारे ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया इज द क्लोजेस्ट यूएस ally in among the BRICS states. Therefore, India joining BRICS and joining the process, what Trump calls the de-dollarization process, is something that is hurtful, and that is something that is unacceptable to the United States. And therefore, India's involvement in BRICS and through BRICS, the process of de-dollarization, currency swaps, bypassing the dollar as a currency, is something that is the reason why Trump administration has imposed high tariffs on India. सो एक नाज़रीन, अगर मैं लास्ट में बात करूं, फैक्टर्स में बात करूं, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स में जो मोस्ट इमीडिएट फैक्टर नजर आता है, दैट्स द रशियन फैक्टर दैट हैज़ बीन क्लेम्ड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इंडियाज जो बाइंग ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया है, second only to China, that is something which, when coupled with other factors, has contributed towards this such a surprising but significantly higher and steep tariffs on India. अब नाज़रीन आते हैं इसके ऊपर इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ दिस decision of high tariffs. नाज़रीन obviously बात है, some of those impacts will be the short term, some would be the medium term, and some would be the long term. बट अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो डेफिनेटली इट वुड काज इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, इफ नॉट सिग्निफिकेंटली, फॉर सम स्कॉलर्स इट वुड बी नॉट मोर देन $6 billion of economic impact on India. But I think this high tariff is just the beginning of a broader economic conflict with India, and therefore short term में तो $6 billion तक का जो loss expected है इंडिया के अंदर, unless the deal is negotiated. But in ultimately in the longer term, if the conflict persists, which is less likely, तो इसकी जो कॉस्ट होती है that could be significantly higher than the current $6 billion. The real problem is not the $6 billion. The real problem is that the Trump administration has so far exempted certain sectors, including जो mobile phones हैं, because iPhone, India is the largest source of iPhones into the United States. iPhone has a plant, Apple has a plant in India. Pharmaceutical is also exempted from those tariffs. Some other sectors are also exempted. But what if Trump started gradually, ending those exemptions? Then that could have a significant impact on India so far. So Indian economy could be ultimately affected.
He is going to visit to China for the first time in China for many years. और वो जो दोनों visits हैं, these two visits are come at a sensitive point when Trump is negotiating trade deal with the Chinese, and Trump is negotiating the Ukraine war and its peace with Russians this Friday जो होनी है अलास्का के अंदर summit होना है Putin और Trump का. So India's gradual tilt away from the United States and trying to cozy up with the Chinese and the Russians is one of the consequences of this tariff. But नाज़रीन हम ये भी जानते हैं कि जब India has a historic relationship with President Putin, they were never away from them. But since the Ukraine war began, India has made some veiled criticism of the Russians war over there. बट ऑन चाइना हम देखा कि जब प्रेसिडेंट मोदी पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे तो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ही ट्राइड टू कोजी अप विद चाइना बट दैट डिडंट वर्क. Wuhan diplomacy was a very interesting initiative, very successful model initially, but that model ultimately failed. So Modi had already made attempts to cozy up with the Chinese, and that attempt had failed. What would make it successful this time, I wonder. But I think the visit to China is not for China. It is more for giving a signal to the United States that if you impose tariffs on allies like us, then we have all options open, and India would stick to the historic policy of strategic autonomy. लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन, अगर मैं इस टैरिफ वार का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर बात करूँ खासकर, तो इट वुड हैव नॉट जस्ट द पॉलिटिकल डिविडेंड्स फॉर पाकिस्तान बट आल्सो इकोनॉमिक डिविडेंड्स फॉर पाकिस्तान. बिकॉज पाकिस्तान के जो रीजनल कंपेटिटर्स हैं फॉर द यूएस मार्केट, हमारे ऊपर जो अब 19% टैरिफ इम्पोज किए गए हैं, इंडिया के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 50% हो जाएंगे. तो पाकिस्तान विल हैव अ स्ट्रेटेजिक कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर इंडिया in getting access to the United States market, although we will not have competitive advantage vis-a-vis Vietnam and Bangladesh and other territories, other states, but vis-a-vis India, we will certainly and definitely have a competitive advantage by getting more access to the United States market. Political dividend bhi hai, obviously Nazeen, we can use this divide between United States and India to highlight the India's aggressive acts against Pakistan, particularly since the Pahalgam incident. India sort of treaty की for example दी जा सकती है because World Bank chief is always appointed by the United States President, and United States President Trump has the power to replace him as well, and therefore we can use the current influence that we have in the United States and current friction between the United States and India to our own advantage, particularly with respect to Indus Waters Treaty, and we also can foster a relationship by acquiring some more weapons that we desperately need in the war on terrorism. So Pakistan can get some strategic, political and economic leverage from this divide and gulf between United States and India, which to me is likely to be short-lived. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं that United States और India के दरमियान में जो टैरिफ वार है, this is very ironic and interesting, and it is clear indication that Trump administration is willing to go to any extent for its economic protectionist policies, not even sparing the closest allies like Israel as well as India. Thank you so much, नाज़रीन, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.